Hello students, today we are going to study the preparation of M.Sc Semester 4 Practical course, and that is multi-step synthesis of benzilic acid from benzaldehyde. This is an example of benzilic acid rearrangement. Synthesis of benzilic acid is a three-step process. Here we have shown these three steps. Step A is the preparation of benzoin from benzaldehyde. Then this is from benzoin we prepare benzil, this which is step B, and in step C we prepare benzilic acid from benzil. So these are the three steps. Now in this slide we can see the structures of all these compounds of all the three steps. The starting compound which we are using is benzaldehyde. Two molecules of benzaldehyde are involved. From this we get benzoin. So this reaction is known as benzoin condensation. Two molecules of benzaldehyde, they condense to give this benzoin, which is a alpha hydroxy ketone. And this reaction, we are not using this reagent thymine hydrochloride, we are using cyanide, potassium cyanide. Then from benzoin, in the second step, we are preparing benzil. So benzoin is an alpha hydroxy ketone, and from this we are getting this benzil, which is a 1,2-diketone. So here oxidation is going on. We are using HNO3 as the oxidizing agent. Then from benzil we get this benzilic acid. So benzilic acid is alpha hydroxy carboxylic acid. So these are the various steps involved and the structures of all these compounds. Now chemistry involved in the synthesis. Here we can see step A, it is benzoin condensation. As I have already said, two molecules of benzaldehyde, they condense and you get benzoin. So this reaction is known as benzoin condensation. So this is the reaction which is involved in step A. Step B involves oxidation. Because you know benzoin, it is alpha hydroxy ketone, and from benzoin we are preparing benzil. So alpha hydroxy ketone has got secondary alcoholic group. Benzoin has got secondary alcoholic group which is being oxidized to ketonic group. So here oxidation is involved in this step B. Then step C involves benzilic acid rearrangement, where benzil is being converted to benzilic acid. So this is basically a rearrangement reaction. Step A, preparation of benzoin from benzaldehyde. The principle involved in this, as I have already said, this is benzoin condensation. Two aromatic aldehydes, they condense in the presence of cyanide ions as catalyst to give alpha hydroxy ketones, which are also known as siloines. So this reaction is known as benzoin condensation, and the reaction is like this. This is benzaldehyde. Two molecules of benzaldehyde are used. The reaction occurs in the presence of cyanide ion, and ethanol and water are used. And these two molecules, they condense to give this alpha hydroxy ketone. So these alpha hydroxy ketones, they are known as siloines, and if the aldehyde you are using is benzaldehyde, then it is known as benzoin. So a siloine is basically the class of aromatic compounds which are alpha hydroxy ketones. Now here it is important to note that the aldehyde you are using here is the one which is without any alpha hydrogen. So the alpha carbon, that is the carbon adjacent to aldehyde group, must not have hydrogen. So
aromatic aldehydes with no alpha hydrogens undergo these reactions. Clear? Mechanism of benzoin condensation. बेंजोइन कंडेंसेशन में हम बेंजाल्डिहाइड यूज कर रहे हैं. बेंजाल्डिहाइड इज द स्टार्टिंग कंपाउंड. इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज करते हैं विद नो अल्फा हाइड्रोजन्स. तो बेंजाल्डिहाइड में क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसके साथ हम ये रिएक्शन करा सकते हैं. और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है. तो CN- जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पे विच इज इलेक्ट्रोफिलिक. और इस पाइल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पे चल जाते हैं, इस पे माइनस चार्ज आ जाता है. CN का एडिशन हो गया यहाँ पे. फिर इस ऑक्सीजन पे H लग जाता है. उसके बाद दिस H लीव्स एज अ प्रोटॉन. OH माइनस के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है और इस कार्बन पे अब माइनस चार्ज आ गया. तो अब ये पूरी स्पीशीज जो है ये न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करती है और ये दूसरे बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है. जैसे यहाँ साइनाइड आयन ने किया था इसी तरह का रिएक्शन यहाँ होता है. ये माइनस चार्ज वाला कार्बन जो है न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ऐड हो जाता है. अब इस OH का H जो है वो इस ऑक्सीजन पे चल जाता है और इस O- क्योंकि इससे CN जो है वो CN- की तरह से इजीली लीव कर सकता है, इसलिए ऑक्सीजन पे इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाता है. ये यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड O बन जाएगा और CN जो है वो CN- की तरह लीव कर देता है. तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म which is there in this benzoin condensation. Now procedure. इस रिएक्शन को हम करते कैसे हैं बेंजोइन कंडेंसेशन को. तो इसमें हम लेंगे 12.5 ग्राम्स बेंजाल्डिहाइड और उसमें हम 25 ग्राम्स पोटेशियम साइनाइड यूज करेंगे. नाउ यूजिंग नो पोटेशियम साइनाइड इज वेरी पॉइजनस, सो वी हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली. And we take these two compounds in a round bottom flask and to this we add 25 ml ethyl alcohol. फिर उसको हम मिक्सचर को रिफ्लक्स करते हैं 30 मिनट्स तक. फिर उसको ठंडा करते हैं और फिल्टर करते हैं बुकनर फनल पे. उसको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर जो भी आपकी यील्ड आती है वो आप रिपोर्ट करेंगे और जो भी है उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे. Now step B is the preparation of Benzil from Benzoin. Principle. इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजोइन से जब हम बेंजिल बनाते हैं तो इसका एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है, इसमें एक सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप है बेंजोइन में विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोनिक ग्रुप. तो ये रिएक्शन होता है. दिस इज बेंजोइन. तो बेंजोइन क्या है, दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है. तो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन. तो ये जो OH है ये कैसा है, सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है. तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये OH CO में कन्वर्ट हो जाता है. तो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होता है. तो वी गेट अल्फा डाइकीटोन या 1,2-डाइकीटोन. So benzoin is alpha hydroxy ketone and it is getting oxidized to benzil, that is a diketone. Mechanism of oxidation of benzoin to benzil. जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है इस पे HNO3 का जो N है वो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है इस N को दे देगा. ये OH इसमें से निकल जाएगा, HNO3 में से OH निकल जाता है. तो अब इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H जो है वो वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाता है. उसके बाद
अब दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस पर H के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा एंड दिस NO2 ग्रुप जो है वो इसमें से लीव कर जाएगा, तो वी गेट बेंजिल. तो दिस इज द मैकेनिज्म. नाउ द प्रोसीजर. बेंजोइन हम लेते हैं 5 ग्राम्स, उसको लेते हैं हम एक 100 ml के राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसमें हम ऐड करते हैं 25 ml कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर उस पे एयर कंडेंसर लगा के उसको हम हीट करते हैं फॉर 1 आवर और टिल द एवोल्यूशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सीजेस. जब तक उसमें से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स निकलना बंद नहीं हो जाती तब तक हम उसको हीट करते हैं. फिर एक फ्लास्क में जिसमें 100 ml ऑफ कोल्ड वाटर ले लेते हैं हम, तो उसमें कंटेंट्स को, ये जो सारे कंटेंट्स हैं इनको डाल देते हैं, तो एक क्रिस्टलाइन येलो कलर का मास बन जाता है. फिर उसको हम बुकनर पैनल पे सॉलिड को ले लेते हैं और फिर उसको अच्छे से वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से. देन वी रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम अल्कोहल एंड देन we take its weight and melting point. So this is how we prepare Benzil from benzoin. Now step C is the preparation of benzilic acid from Benzil. This is a base catalyzed reaction और इसमें क्या हो रहा है, 1,2-diketone is being converted to alpha hydroxy carboxylic acid. Benzil is a 1,2-diketone and benzilic acid is alpha hydroxy carboxylic acid. So here first there is attack of base potassium hydroxide to give a potassium salt of benzilic acid. Then we carry out its acidification to give benzilic acid. Now mechanism of benzilic acid rearrangement. This is the mechanism which is shown here. And so here you can see the first step is the nucleophilic addition of hydroxide ion to carbonyl carbon. This is your benzene and potassium hydroxide is attacking on it. So this C double bond, oh, this carbon is electrophilic, these electrons migrate here, oxygen becomes negative, so K plus attacks on oxygen and OH minus attacks on carbon. So you get this species. Then this species is having oxygen which is anionic. So the resulting anionic oxygen assists phenyl migration with the bonding electron pair. Now what happens? This electrons of this pi bond, they shift here and there is migration of this phenyl group along with its bonding electron pair to this electrophilic carbon. And this minus charge, electrons of this minus charge, they go here. So you get a double bond here. So you get this species. And now what happens is there is rapid proton transfer. There's a proton from OH group, it leaves from here and it goes here. You get a negative charge here. Now why does this happen? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है as compared to this oxygen because this minus charge electrons, they are in conjugation with this double bond. And when there is conjugation, stability increases. So this minus charge is not in conjugation with any double bond, but here you get this minus charge. If this oxygen is negatively charged, it is in conjugation with this CO electrons, pi electrons of this CO group. So that is why there is rapid proton transfer from here to here. So you get this potassium benzylate. Then we carry out its acidification. तो इसमें से K plus चला जाता है और OH लग जाता है. So we get benzilic acid. So this is the rearrangement which occurs in
benzilic acid preparation. Now the procedure, how you prepare benzilic acid from benzil. We take 3 grams of benzil in a 100 ml round bottom flask. To this we add potassium hydroxide 3 grams in 10 ml of water. इसका हम पहले सोल्यूशन बनाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, उसको फिर 3 ग्राम्स बेंजिल में जो हमने 100 ml राउंड बॉटम ग्लास में लिया है उसमें ऐड कर देंगे. Then we add 7 ml ethanol and shake. So we will get a bluish black solution. Then we reflux the mixture for 15 minutes on a water bath. Then we transfer these contents to a china dish. उसको फिर हम कूल करते हैं for 30 minutes. तो बेंजिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बन जाता है. उसको फिल्टर करते हैं और वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से, और फिर उसको हम 30 ml वाटर में डिसॉल्व करके फिर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं, जिससे उसका एसिडिफिकेशन होता है. उससे क्या होगा, पोटेशियम सॉल्ट जो है वो बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो you get a red brown precipitate of the acid. Then we filter it and wash it with cold water and recrystallize from boiling water using activated charcoal. Then we report the yield and melting point. So this is how we carry out this experiment. That is synthesis of benzilic acid. So first we prepare benzoin from benzaldehyde, that is benzoin condensation. Then from benzoin we carry out its oxidation with nitric acid, we get benzil. And then from benzil we carry out this benzilic acid rearrangement and we get this benzilic acid. So I hope you understand the mechanism and all the 3 steps. So please watch this video carefully and also study the mechanism from your books also, and you should be very clear because questions may be asked about the mechanism in your viva also. That's all for today. Thank you so much.